So namaskar all of you. Amaro Odisha Civil Service ro mains test series ro first test तार आज हमें discussion part टा देखिबा. So 20 questions भितरु first 5 टा questions open discussion रे रखिबा. आउ ए जो टेस्ट रो एटा पेपर 1 रो हम स्टार्ट करथु. डिटेल्स करिका हमर टेलीग्राम चैनल रे भी अछि. प्लस आपण ए जो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे भी आउ डिटेल्स पाई परिबे. सो ए टेस्ट नंबर 1 रो सिलेबस जीएस पेपर 1 कल्चर एंड हेरिटेज रो एतिकी पार्ट्स भितरु अछि. हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन कल्चर कवरिंग द salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times, temple architecture of Odisha, socio-cultural development in Odisha. तो एतिकी आपनकर टेस्ट 1 पई सिलेबस अछि. किंतु एइटा हला कोन इंडिकेटिव सिलेबस. आपन जेतरे पढिबे तो आपनकर गोटे फोल्डर अछि हाई वैल्यू टॉपिक्स. माने ए टॉपिक्स भितरु एक्चुअली मते पढिवार कोन अछि सेटा टिके आपनको देखिया पे पड़िबो. ओके, तो फर्स्ट हला जो आर्ट फॉर्म्स कहछि से. ओके, सो सेथरे आपनकर क्लासिकल डांसेस सेमती तो कह गले बहुत गुडे अछि. किंतु प्रीवियस इयर्स जहा सब पढिछि आ जो गुडा पढिवार संभावना टिके अधिका ता ऊपर आपन फोकस करिया पड़िबो. जेमती भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुडी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सतरिया. ओके, फोक डांसेस सेमती ओडिसा रो देखिबे हमर घुमुरा, छौ, डालखाई, संबलपुरी और पाइक. म्यूजिक सेमती देखले हिंदुस्तानी वर्सेस कार्नाटिक म्यूजिक, ओडिसा म्यूजिक और स्पेशली जयदेव एंड गीत गोविंद. पेंटिंग सेमती देखले आपनकर पट्टचित्र, मधुबनी, वारली, कलामकारी, मुगल और राजपूत पेंटिंग्स. तार पुणी ता भितर भी तार सब स्कूल्स करिका अछि. लिटरेचर वैदिक, बुद्धिस्ट, संगम लिटरेचर, भक्ति और ओडिया लिटरेचर. आउ आर्किटेक्चर जदि हम देखिबा नागर, द्राविड वेसर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तापरे सेकंड टॉपिक जोटा कहला टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा. तो सेथरे हमर रेखा देउल, पीढ़ा देउल, खाकरा देउल आ ऊपर प्राय क्वेश्चंस पड़े. प्लस जो गुडा कि आउ छोट छोट फॉर्म्स अछि. ओके, जेमति कि यू नो आपनकर पांचटा टाइप रो मंदिर अछि ओडिसा रे. तीनटा मेजर और दुटा माइनर. हाइपेथेरल टेंपल्स हला, तापरे जेमति कि आपनकर जो शक्ति पीठस हला, 64 योगिनी मंदिर हरिका हला, तारो स्ट्रक्चर टा अलगा. ओके, तापरे टेंपल कंपोनेंट्स विमान, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोग मंडप, टेंपल एवोल्यूशन एटा इंपोर्टेंट आउ इंडिविजुअल टेंपल्स ओवरऑल एवोल्यूशन कोन से टेस्ट रे भी अछि क्वेश्चन टा. ओके, आउ परशुरामेश्वर टेंपल रु जोटी की प्रथम थर आपनकर ओके गोटे गर्भगृह सहित आपनकर मंडप टा रहिला. ओके, जगमोहन टा रहिला फर्स्ट टाइम पई परशुरामेश्वर टेंपल रे. मुक्तेश्वर, राजा रानी लिंगराज, जगन्नाथ टेंपल एंड कोणार्क टेंपल. ओके, तो ता भितरु जो इंपोर्टेंट टेंपल्स उडा को एस्पेक्ट रे फोकस करिया रो जोडा पढी साथि सब आगुरु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे कोणार्क टेंपल, जगन्नाथ टेंपल, लिंगराज टेंपल, मुक्तेश्वर टेंपल. तापरे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट रे सबुटु इंपोर्टेंट हैला जगन्नाथ कल्चर. ओके, जोथरे कि आपण फोकस करिवे सोशल इंटीग्रेशन, जगन्नाथ कल्चर रे केमती ओडिसा सोसाइटी को बांधी की रखिछि, रिलीजियस इंक्लूसिवनेस, कल्चरल यूनिटी, भक्ति मूवमेंट इन ओडिसा रे पंचसखा, चैतन्य महाप्रभु आउ जो गौड़ीय वैष्णविज्म जो कॉन्सेप्ट पूरा सेटा आपण को बुझिबार अछि. आउ कल्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. तापरे ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस एटा पॉलिटी रे भी आपण और डिटेल्स पढिबे. तापरे लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी, ट्राइबल कल्चर, इंपोर्टेंट ट्राइब्स कौन, संथाल, सारा एंड बंदा. नेक्स्ट फेस्टिवल्स भीतर इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स रथ यात्रा, नुआखाई, रज फेस्टिवल, बाली यात्रा एंड चंदन यात्रा. हैंडीक्राफ्ट्स भीतर पट्टचित्र, सिल्वर फिलिग्री, स्टोन कार्विंग्स एंड एप्लिक वर्क ऑफ पिपिली. वुमेन एंड सोसाइटी सेमती तो बहुत गुडे वुमेन लीडर्स अछंती. बट एई पॉइंट ऑफ व्यू रु सारला देवी,
रमा देवी और मालती चौधरी। मॉडर्न सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स, ओडिया लैंग्वेज क्लासिकल स्टेटस, जीआई टैग प्रोडक्ट्स, एटा इंपोर्टेंट, एटा हमें एग्जांपल हिसाब रे भी दबु। ओके, बहुत गुडे एसएस रे हे पारे किंबा आउ भी अलगा जगह रे आपण एग्जांपल हिसाब रे दे पारे। प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, तो एतिकी आपण को देखिया पड़िबो ए जो टेस्ट नंबर 1 रो ओके इंपोर्टेंट टॉपिक्स भीतर। नाउ लेट अस गो टू द टेस्ट। प्रथम पांचटा क्वेश्चन हमें टिके डिस्कस करिवे। जो माने ऑलरेडी सबमिशन कर दी चंती 70% पिला को करेक्टेड खाता मिल जाइची। 4 दिन रे आपनकर खाताटा इवैल्यूएट होची। बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन रहउची जतरे कि ईच क्वेश्चन रो आपनकर इवैल्यूएशन माने पूरा डिटेल्स रे कि कोन कोन आपन लैक करचंती सेटा आपन कहउची। 70% ऑफ द पेपर्स हैव ऑलरेडी बीन करेक्टेड, जो माने ऑलरेडी देइचंती। मोस्ट पिला आई अंडरस्टैंड जॉइन करिवे आफ्टर द रिजल्ट्स। किछि जण एंती भी अछंती जो माने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जॉइन करचंती। हमर 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहउची, जो थरे एवरी डे 50 टा एमसीक्यू और 10 टा मेंस क्वेश्चन आपन को मिलची लेखिकी सबमिट करिया पे। तो आपण सेथरे भी जॉइन कर परिए। सेटा टिके लॉन्ग टर्म कोर्स ता 1 ईयर रो कोर्स ता सेटा, किंतु पूरा चैप्टर वाइज आपन को कवरेज होची सब सब्जेक्ट रो। जस्ट सेटा स्टार्ट हिची एबे। ओके, आई गेस ओनली 3टा क्लास तार सरची, तो सेथरे भी जॉइन कर परिबे। जो माने ऑलरेडी कंप्लीट करि सरचंती कोर्स एई थर को मेंस दोचंती, तो तांको पई किंबा मेंस दबार एक्सपेक्ट करचंती रिजल्ट तो जल्दी बाहरी जीवो, देन दिस टेस्ट सीरीज इज फॉर यू। ए टेस्ट सीरीज रे हमें इनकॉर्पोरेट करूछु 55 टा टेस्ट, सब गुडा 3 इयर्स रो। सेटा ऑब्वियसली आपनकर 2 मंथ्स पाखा पाखी हाथ रहिबो, तो आपण लिखि तो परिबेन 55 टा टेस्ट, किंतु यू गो थ्रू 55 टेस्ट, यू राइट 10 15 20 जेतिकिटा टेस्ट आपण लिखि परिबे। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। सो एतिकी सिलेबस आपनकर रहउची। ओके, जोटा मु डिस्कस करली प्रथमे जो माने आंसर लिखिकी पठेबे, तो 9437002210 को गोटे पीडीएफ फाइल करके सेटा पठेबे। फर्स्ट पेज रे आपन ना व्हाट्सएप नंबर लिखिबे। ओके, क्वेश्चन 1 को आसंदो। एनालाइज द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, दीटा जिंस ऊपर एटी फोकस करिया पे आपन कहला ज्योग्राफिकल and cultural diversity, geographical diversity or cultural diversity in shaping India's art forms, literature and architecture across regions, across regions। तेणु एथरे दी तीनटा जिंस आपण देखंतु कि हमर ड्यू टू geography and geography has also impacted the culture। ओके, तो हिल्स रे आपण को अलगा, हिमालयन एरियाज रे आपन को अलगा फूड, अलगा कल्चर, तांकर क्लॉथिंग अलगा, प्लेन्स रे अलगा, कोस्ट रे अलगा। ओके, तो से हिसाब रे तांकर कल्चर को भी सेटा डिफाइन करै छी। तो बोथ ज्योग्राफी और कल्चरल डाइवर्सिटी, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को केमिति सेटा प्रभावित करछि अक्रॉस रीजन्स। माने आपन बहुत बड़ा एग्जांपल द पड़ियो कि नॉर्थ रे इटा, नॉर्थ ईस्ट रे इटा, ईस्ट रे इटा, साउथ वेस्ट कि साउथ रे इटा, वेस्ट रे इटा। ओके, सो बहुत गुडे कंपैरिजन आपन करा पड़ियो। सो प्रथमे क्वेश्चन ता बुझंतु। शॉर्ट क्रिस्प गोटे कि 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन रहबा कथा। बहुत जण कोन करछन ना डायरेक्टली स्टार्ट करछंती, ओके, विदाउट गिविंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जेतल देबे लिखिबेन इंट्रोडक्शन, सेटा मॉडल आंसर रे दिया छि आपन को बुझिया पे कि एटा हला इंट्रोडक्शन ता। ठीक अछि, तेणु ए जो कल्चरल डाइवर्सिटी आउ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आर गोटे बहुत बड़ रोल अच्छी। ओके, इंडियन आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर रे जोटा आउ तार रीजनल डायमेंशंस भी अच्छी। ओके, सो सेटा आपन को लिखिबार अच्छी इंट्रोडक्शन जेंति एटी देछि अक्रॉस प्लेन्स, माउंटेन्स, कोस्ट एंड फॉरेस्ट, लोकल कंडीशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड क्रिएटिव फॉर्म्स। तो ऑब्वियसली डिफरेंट जगह रे आपन को मटेरियल अलग अलग यूज हो। तो आपन हिमालयन एरियाज रे अलग मटेरियल यूज होची, कोस्ट रे अलग मटेरियल यूज होची, आपन को डेजर्ट्स करिकार अलग मटेरियल यूज होची, तो ता ऊपर टिके लिखिबार अछि। ओके, देखंतु कतडा हला जो मॉडल आंसर आपन देखिबे
सब या देखिए किए मत कह 250 वर्ड्स भीतर लिखा है कि टाइम को यदि कन्वर्ट करदेवी मत ये टाइम लिखार अच्छे मोर मॉडल आंसर जब 1000 वर्ड हम देन मत पिक एंड चूज करिया पड़े भीतर लिखी कौन छाड़ी कौन आम टेस्ट सीरीज जो मॉडल आंसर स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट हिसाब से ओके देखिए लास्ट तार वर्ड काउंटा भी देखिए है तेणु मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन ओके टू जियोग्राफी तापर कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी एज पैट्रोनेज ड्राइवर्स ओके डिफरेंट जगह रे डिफरेंट आपनकर डायनेस्टीज पैट्रोनेज दउतिला ओके फॉर एग्जांपल किछिटा डायनेस्टीज से माने पर्टिकुलर रिलीजन को पैट्रोनेज दउतिले किछि डायनेस्टीज से माने प्राय सब रिलीजन सेही टाइम रो ताको पैट्रोनेज दउतिले ओके सो से जिनस लेके किछि एग्जांपल्स आपण दे परिबे जेमति कि चोलास इन द साउथ राष्ट्रकूटास मुगल्स रीजनल किंग्स इन ओडिशा ओके दे प्रमोटेड रीजन स्पेसिफिक आर्ट स्कूल्स ओके तापर नेक्स्ट रीजनल आर्ट क्राफ्ट एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस तो रीजन टू रीजन तांकर एटा वैरी करछि आमे ओडिसा रो एग्जांपल्स तो पट्टचित्र एठी देछि टेक्सटाइल्स रे संबलपुरी कात्र देछि ओके ताको जीआई रिकॉग्निशन भी अछि ठीक अछि अलगा जगह देखिले तमिल रो संगम लिटरेचर ओडिया डिवोशनल पोएट्री बेंगली मेडिवल लिटरेचर हे गला ओके तापरे रीजनल डांस म्यूजिक फॉर्म्स रिफ्लेक्ट लोकल सेंसिबिलिटीज ठीक है तो से लोकल कल्चर लोकल इमोशन सेटा को से रेफर करते ओडिसी रो एग्जांपल देला तापरे आर्किटेक्चरल सिंथेसिस एंड रीजनल वेरिएशंस तेणु आमे जे देखिबा तीनटा मेजर स्टाइल्स आपनकर आर्किटेक्चर जेने टेंपल आर्किटेक्चर रा नॉर्थ रे जोटा आपण कहउचंदी आर्यव्रत सेठी आपण देखिले कोन सेठी मेनली आपण को मिलला द नागर स्कूल और तार सब सब स्कूल्स अछि कलिंग स्कूल भी तार सब स्कूल मझी को आसिले जो मध्य देश को आउटला सेठी आपण वेसर ट्रेडिशन देखले डेक्कन एंड अदर प्लेसेस तापर तळु को आसिले जते बेले आपण दक्षिण पट दैट इज साउथ ऑफ इंडिया सेठी द्रविड़ ट्रेडिशन देखले ठीक अछि तो सेही जिंस सेथरे ऑर्नामेंटेशन आइकोनोग्राफी स्पैटल प्लान स्कल्पचरल मोटिव्स डिफर रीजनल और ता भीतर भी रीजनल वेरिएशंस अछि फॉर एग्जांपल आपण जदि नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखिबे ताले सेठी कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गोटे सब स्कूल तापर बेंगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर किंबा सेटा भी गोटे सब स्कूल ओके सो बहुत गुडे सब स्कूल आपनकर अछि सेतरे सेटा आपन को ओके तबार अछि आंसर रे तो तापर कंक्लूजन टू लाइन्स 289 वर्ड्स आपनकर आ गोटे माइंड मैप भीतर दे परियो 289 वर्ड्स प्लस माइनस 10% ओके तो 275 भीतर रहया कथा केना एटा सेक्शन ए क्वेश्चन ना 250 वर्ड्स भीतर ओके so now come to question number 2 so second question है rock cut architecture is among the most reliable sources for understanding early Indian society elicited with examples from different regions तो एटा फर्स्ट बुझन तो क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट से कोन कहला कि जो रॉक कट टेंपल आर्किटेक्चर ओके सेटा सबुटो रिलायबल सेतरे किछि माने चेंजेस हे परिबनी कि जेमति कि लिटरेचर रे कि कोन ओटे भूलभाल लिखि देला से टाइप रो हे परिबन ओके सो एग्जांपल्स किछिटा दबार अछि और डिफरेंट रीजन रो एग्जांपल्स अपन को दबार अछि ओके तो केमती सेटा इफेक्ट पकोची आउ केमती सेटा गोटे अकाउंट दोउची गोटे प्रॉपर एक्यूरेट एक्सक्यूज मी अकाउंट दोउची के का विषय रे पॉलिटी इकोनॉमी फेथ टेक्नोलॉजी ओके 3rd सेंचुरी बीसी ठीक है सो दे आर आल्सो कॉल्ड रिलायबल टाइम कैप्सूल्स ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री तो फर्स्ट है स्टेट आउ पैट्रोनेज ऊपर से कहूँ तो डिफरेंट रीजन्स अपन एग्जांपल देबे ओके तेणु बिहार टू स्टार्ट करी अपन मौर्यन एम्पायर रू स्टार्ट कले ओके तापरे एपटे आपनकर अजंता रो एग्जांपल्स देले ओके सोशल कंपोजिशन ऑफ डोनर्स जो माने डोनेशन दउथिले मंदिर बने पई कि अलगा जो आर्किटेक्चर बने पई को लोक बने थिले एमति तो नहीं खाली राज्य माने थिले बट अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज सेतरे बिजनेसमैन माने मर्चेंट्स माने थिले
ओके इंस्टीट्यूशनल गिल्ड्स गुड़ा थिले नन्स मॉन्क्स आउ इवन ग्रीक लोग यवनस से माने भी कंट्रीब्यूट करथिले ठीक अछि तापरे इकोनॉमी ट्रेड एंड वाटर मैनेजमेंट तो सेथरु भी आपण जानि पाउचंती तांकर जो रॉक कट आर्किटेक्चर ओके कन्हेरी रो एग्जांपल एठी देछि ओके आ कोंकण वैली तापरे रिलीजन आउ प्लूरालिटी सो डिफरेंट एरियास ओडिसा रु नेले ताले हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन जोटा ओके खारवेडंकर सो जैनिज्म विषय सेटा कहूची ओके सेमती अजंता म्यूरल्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो कथाटा हैला कि हमें बहुत दूर इनसे तर लिखि परिया कि कथाटा हैला पिन पॉइंटेड लिखियार अछि ओडिसा रे तो पॉइंट जाबी हैला हमें लिखिबा ओके काना 250 वर्ड से मु सारिवार अछि तापरे टेक्नोलॉजी और फॉर्म ठीक है जेमती कि से द चंद्रशाला रो जो चैत्य आर्क अछि ओके आउ बराबर रे जो हाई जो एक्सट्रीमली पॉलिश्ड स्टोन्स जो गुड़ा यूज है ओके तो स्टोन टेक्निक्स ओके सेतबेले जोड़ा यूज होतला ता विषय से कहूछ राइट रीजनल स्प्रेड अपन सब जगह रो ईस्ट रु नॉर्थ ईस्ट रु वेस्ट ऑफ डेक्कन रु आउ ओके इवन अब्रॉड बाहर भी ओके सेउठु भी हमें बहुत गुड़े जिनस इम्बाइब करिछु ओके सो कंक्लूजन दी लाइन रो अपन को दबार अछि ऊपर एटा 291 वर्ड्स रो मॉडल आंसर ता अछि ओके आ तार यदि अपन गोटे डायग्राम की मन रखिया पे अछि ताले अपन गोटे माइंड मैप भी भाबी परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के आसंतु assess the contribution of Gupta period to Indian cultural synthesis हला तो गुप्ता पीरियड रो कंट्रीब्यूशन कहा ऊपर कल्चरल सिंथेसिस आर्ट रे कल्चर रे और रिलीजियस सिंबलिज्म रे ठीक है तो प्रथम स्टार्ट करिए गुप्ता पीरियड ठीक है 350 टू 550 सी ताको गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर अपन कहउछन ओके सो कौन कंट्रीब्यूशन थिला आर्ट स्कल्पचर और रिलीजियस सिंबलिज्म रे सो स्टाइलिस्टिक सिंथेसिस एंड क्लासिकल डेकोरम इनते एग्जांपल्स हमें दे परिबा मथुरा और गांधारा स्टाइल्स को जो बैलेंस कराइतला ओके सो द क्लासिकल डेकोरम ओके तापरे रिलीजियस इमेजरी एंड आइकोनोग्राफिक इनोवेशन तो कौन शिफ्ट हैला सेटा बहुत इंपोर्टेंट ओके मेनली बुद्धिज्म रे डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एनिकोनिक रु एंथ्रोपोमॉर्फिक चेंजटा हैला ओके तापरे शैविज्म और वैष्णविज्म रे सेठी लॉर्ड शिव ओके और लॉर्ड विष्णुकर जो आइकोनोग्राफी सेथरे नुआ फिगर्स ऐड हैला ओके लाइक लकुलिशा ओके एंड लॉर्ड विष्णुस मल्टी आर्म फॉर्म्स ठीक है तापर नटराज शिवर भी एग्जांपल देछि ओके रिलीजियस इमेजरी एंड आइकोनोग्राफिक इनोवेशन तापर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्कल्पचर तो बहुत गुड़े जगह आपण जेमति कि दशावतार टेम्पल रे देला ओके तो स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्ट हैला ए टाइम रे ओके तापर मीडिया डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस सो डिफरेंट जगह रे डिपेंडिंग ऑन द टेरेन डिफरेंट मटेरियल्स यूज होतला ओके सो टेराकोटा प्लेक्स ओके मेटल इमेजेस लाइक द ब्रह्मा फ्रॉम मीरपुर खास एंड ब्रॉन्ज आइकॉन्स रिफ्लेक्ट टेक्निकल मास्टरी ओके आउ केवल इंडिया रे नुह बाहर को भी इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेयर आउ जापानीज ओके जावानीज जावा ओके तापरे कल्चरल सिंथेसिस एंड रिलीजियस हार्मनी सेटा भी से पचरची तो जो हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म जो रिलीजन इंडिक रिलीजन जोड़ा से टाइम रे थिला एंशिएंट इंडिया रे तो तार गोटे सिंक्रोनस किबा सिंथेसिस ओके सेटा प्रमोट करची गुप्ता पीरियड ओके सो अगेन वन और टू लाइंस कंक्लूजन देबे एटा हला 300 वर्ड्स एटा टिके 25 वर्ड खने बेसी हे गला
बट द थिंग इज दैट आपन जदि आंसर प्रॉपर्ली लिखुचंती ताहले चली जिवो केना एटा आपन को रेफरेंस पे एठी हमें लिखुछु 301 वर्ड सेठी तो आपन लिखिबार नहीं ना बट आई वुड नॉट एडवाइस कि से मैक्सिमम 20-25 टा वर्ड तो रूल है 10% प्लस और माइनस 250 वर्ड जो कहूँ 225 मिनिमम 275 मैक्सिमम ओके सेमती किसी ना मुझे 280 290 लिखिदेली आ टाइम भी हो जाऊँगी ठीक अच्छे ओके कि 250 रु कम हवा कथा ना कम आंसर लिखले छोट आंसर लिखले सेटा प्रोब्लेमेटिक हम ठीक अच्छे एबे 4 नंबर क्वेश्चन को आसतु हाउ हैव इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स लाइक Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi contributed to preservation of intangible cultural heritage and local traditions. Okay. So classical dance forms तीनटा से देखिए हम सही तीनटा ही लिखिबा Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi contributed to preservation of intangible cultural heritage and local traditions. Okay. So एटा बहुत ही important कोन फर्स्ट तो हला oral transmission. Okay, local customs, spiritual symbolism, and regional aesthetics. Okay, they make them vital carriers of India's cultural identity. Just a minute. Okay, so तापर अपन आसुंदु नेक्स्ट पॉइंट को प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज एंड लोकल ट्रेडिशन केमती होची प्रथमे तो ट्रांसलेशन ऑफ ओरल एंड जेस्चरल नॉलेज ओके जोड़ा कि गुरु शिक्षा परंपरा ओके तो जो टेक्निक्स गुड़ा देछि सेटा मुद्रास रासस एंड तालस ओके तो जो सब हमरो पुराना वैदिक लिटरेचर है कि अलग लिटरेचर जहाँ सब अच्छी तो सही कॉन्सेप्ट गुड़ा टेम्पल ट्रेडिशंस गुड़ा से गुड़ा पास ऑन होची तापरे कंजर्वेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड म्यूजिक तो एग्जांपल्स अपन दे परिबे तमिल और संस्कृत कंपोजिशन कथक इंटीग्रेट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक कुचिपुडी एम्प्लॉयज तेलुगु लिरिक्स ओके सो गोटे यूनिफॉर्मिटी ता सहित रीजनल वेरिएशन को आपण सिंथेसाइज करछन नेक्स्ट रिचुअल एंड रिलीजियस एसोसिएशन तो फॉर एग्जांपल भारतनाट्यम एंड ओडिसी ओके एगुड़ा सब कौन टेम्पल डांसेस टेम्पल्स रु इवॉल्व हिच फ्रॉम द देवदासी एंड महारी ट्रेडिशंस देन कुचिपुडी originated in Andhra temples okay as Bhagavata Mela Natakam so ritual and religious association तो बहुत गुड़े आ भितर डांस फॉर्म्स आपण टेम्पल रु ओरिजिनेट करछ ओके तापरे प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड कॉस्ट्यूम्स तेणु जो लोकल क्राफ्ट्स और कॉस्ट्यूम्स जेमति कि सिल्क ओके तमिलनाडु रहे गला किंबा सिल्वर फिलिग्री हे गला ओडिसा रो ओके local crafts or costumes then syncretism and adaptation okay syncretism and adaptation तो तार एग्जांपल्स आपण कथक रो दे परिबे इट इवॉल्व थ्रू हिंदू मुस्लिम कल्चरल फ्यूजन ओके तापरे डांस फेस्टिवल्स जेमति कोणार्क खजुराहो एंड नत्यांजलि ओके तो सेतरे कोन ना रीजनल आइडेंटिटी टा मेंटेन हे की रहउछ ओके तो दी लाइन आपण कंक्लूजन रे दे परिबे 252 वर्ड्स दिस इज मोर और लेस ठीक आपणकर जेति की हबा कथा ओके एंड देन यू कैन गो थ्रू द माइंड मैप एक्सक्यूज मी तो लास्ट क्वेश्चन जोटा आज हम डिस्कस करिबा क्रिटिकली एनालाइज हाउ इंडियन आर्ट एंड कल्चर has responded to external influences like Persian, Islamic, European while maintaining continuity. अपन जानते Indian art
एंड कल्चर रो सबुठु बड़ गोटे जोटा कि मेन पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूटी एंड चेंज ओके कंटिन्यूअस भी अच्छी किंतु बहुत जगह चेंजेस भी होती जो जिनसा चेंज करिया दरकार सो बाहर जिते अलगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आछि तार भलो जिनसोडा हम इनवाइट कर दैछु किंतु हमर जो बेसिक जिनसोडा ताको हम कंटिन्यू करछु ओके सो कोर रेस्पॉन्स एंड कंटिन्यूटी कोर रेस्पॉन्स कोन जिते बाहर गोटे कल्चरटा आसुची और तार सिंथेसिस होउची से किसी गोटे कंट्रीब्यूट करूची ताले आमे ताको केमती धरतु ताको नेगेट कर दउछु ना ताको कंप्लीटली आमे सिंथेसाइज कर दउछु ना आमे सिलेक्टिवली सिंथेसाइज करछु से जिनसटा आपन लिखियार अछि तो एटा फेजेस रे लिखिबे ओके दैट मेडिवल इंडिया रे प्रथमे जते बेले आपनकर इंडो पर्शियन सिंथेसिस ओके दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड रो राइट तो किछि एग्जांपल्स देछि जेमति अकबर नामा और हमजा नामा रो एग्जांपल देछि एमति बहुत गुडे एग्जांपल देबो बट हमको 250 वर्ड रे सारिबार अछि ओके एंड फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम आर्ट आउ इंडियन आर्ट जते बेले सेटा कंबाइन हैला राइट लाइक द कलश फिनाल्स एंड फ्लोरल इनलेस इन ताजमहल रीजनल adaptation and diffusion तो different areas जेमते अवध हे गला जयपुर हे गला ओके साउथ रे भी ओडिसा रे भी सेपटे पाला आपनकर वेस्ट बंगाल रे एठी अलगा अलगा आपनकर ओके रीजनल एडाप्टेशंस रहला तापरे जते बेले यूरोपियंस माने आसिले ओके तो कंपनी पेंटिंग्स ओके तो सेगुडा इंट्रोड्यूस कला कोन लीनियर पर्सपेक्टिव एंड रियलिज्म तापरे इंडियन पेंटर्स माने भी थिले जो माने बहुत कंट्रीब्यूट करले जेमति कि राजा रवि वर्मा हे गले ओके एंड द स्कूल ऑफ आर्ट्स लाइक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स ओके जोतरे अवनींद्रनाथ टैगोर एंड अदर्स वर आल्सो देयर ओके तापरे ब्रिटिश पीरियड रे इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर तार एग्जांपल्स आपण दे परिबे विक्टोरिया मेमोरियल गेटवे ऑफ इंडिया तापरे कंटिन्यूटी ऑफ सैक्रेड आर्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट जोडा कि चोला ब्रॉन्ज आउ मधुबनी पेंटिंग से कहि पारे ओके सो सैक्रेड आर्ट का भी कंटिन्यू द ट्रेडिशनल टेंपल आर्ट ता सेटा भी कंटिन्यू हैला ओके जोडा कि हमें पट्टचित्र भी सेतरे कहि पारे राइट सो डायलॉग ऑफ कंटिन्यूटी एमिड्स चेंज ठीक है 254 वर्ड्स रो मॉडल आंसर ता अछि सी यू कैन नॉट राइट लाइक द मॉडल आंसर आपन को पॉइंट्स धरिबार अछि जोडा एठी पॉइंट वाइज देछि ना 7-8 पॉइंट्स दोची सब आंसर रे से 7-8 पॉइंट्स हमें न लिखि पारो 4-5 ता भीतर लिखिबा सेटा बेसी इंपोर्टेंट ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 सो वी विल स्टॉप हियर देन तो जो माने आंसर लिखि सारचंती आउ सबमिट करनांती यू कैन सबमिट अपन जेतले सबमिट करिवे टाइम अपन 4 डेज रहउची 4 डेज भितरे आपनकर सेटा इवैल्यूएट हेकी बहुत डिटेल इवैल्यूएशन हबो ओके एंड आफ्टर दैट अपन वॉइस नोट भी गोटे मिल जिवो along with the text evaluation okay so I wish you all the best जो माने प्रिपेयर करचंदी एथर को मेंस दबा पई जो माने भाबुचंदी जंगर कट ऑफ ऊपर एस्टिमेटेड मार्क्स अछि सेटा तो जणा पड़ जाओ किछि दिन परे ओके एंड ता छडा जो माने एबे प्रिपेयर करचंदी 2 वर्ष 3 वर्ष परे देबे तो जोटा कहली हमर 1 ईयर मेंटरशिप बैच रहउची जो थरे गोटे पर्टिकुलर प्लान हम स्टडी प्लान अपन को दोछु सेतरे एवरीडे 50 टा एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और तार 10 टा मेंस क्वेश्चन रहउची ता भीतर मेंस क्वेश्चन रो अपन लिखि की पठाओ सेटा भी सेम डे 4 डेज इवैल्यूएशन रे रहउची ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन नमस्कार।